Hello, welcome to Aapkikhabar, and today we are going to discuss about the very eminent personality. She is the author, she is psychologist, she is career guidance expert, parent coach, teacher, trainer, facilitator, moderator, and lot of qualities she has. Thank And you. today, as you are looking with us in panel Neha Wahi. Neha Wahi is the author of PowerCom. And today we are going, especially we are today going to discuss about the book PowerCom. So let us start now. And first question from Neha Wahi ji. Neha ji, we would like to know about your professional background. Sure. Firstly, thank you so much, Rajiv ji, for hosting this and having me over. The book indeed is very special to me and very close to my heart. So, any conversation that happens around the book becomes very special. So, thank you. About my professional journey, I think आप काफी हद तक बता चुके हैं, but still I like to say that I have about 16 to 18 years of experience with working with schools, colleges, corporates, etc. जिसमें मेरा largely interaction रहा youth के साथ. There may be different age groups of students, right from a senior school maybe to college level and pass outs. Even in corporates, young engineers, young management trainees. So this I work largely with them. जब उनके साथ काम किया तो कुछ teachers का pain point समझ में आया, professors की problem समझ में आई. There was a lot of generational gap that I felt we could fill in as trainers and coaches. उस पे काम किया. वहां से करते करते पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई तो समझ आया कि वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूडेड हैं, परेशान हैं. इस जनरेशन के साथ जो अपने चैलेंजेस आए हैं उन्हें मीट करने के लिए आई थिंक दे स्टिल नीडेड दैट किट, दैट टूल किट. तो parenting is I think a very crucial topic. A lot of people are talking about it today. I did my certification from Yale. After completing it from Yale University, I started practicing and काफी पेरेंट्स की इसमें हेल्प हो पाई है. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम देयर इट वाज द एड्यू लीडर फ्रेटर्निटी जिनके साथ मैंने काफी एक्सटेंसिवली काम किया बाय moderating a lot of conversations and chats and also facilitating some leadership trainings. So on a whole, this has been my experience towards the education and the corporate sector. Very good. And my second question is from Neha ji. Neha ji, why did you choose PowerCom as your topic for book? आई थिंक लाइक आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन जो बच्चों के साथ बढ़ा. मैंने नोटिस किया एज ग्रुप, सिटी, प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या आप टीयर 2 टीयर 3 की बात करें, कॉस्मोपॉलिटन्स की करें, मेट्रोपॉलिटन्स की करें, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है which was all around very important for everybody. There was a sense of belonging which is important to everybody has this desire to belong, and thanks to social media वो बहुत बढ़ गई है. लेकिन बिलोंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपका गिफ्ट ऑफ गैप. आप किस तरह अपनी बात को आगे रखते हैं और आप एक ग्रुप में, Yes. एक स्कूल में, एक ट्राइब में इंक्लूड या इन्वॉल्व किए जाते हैं. हर किसी की एक नीड बन गई फ्रॉम डिजायर. आई थिंक बैक इन आवर स्टेज इट वाज मोर डिजायर, नाउ इट इज मोर नीड. So there's a certain struggle I sensed in all different stratas that I worked with, and I felt ki with all this experience, if I can jot down some things which can be relevant for their communication and their journey, it will be very helpful to them. So therefore, PowerCom. So, now it is very much important to know how it is relevant to the reader. Yes. So it is relevant in a lot of ways because अगर हम लोग अपने दिन का waking time when we are not sleeping, if I calculate, तो राजीव जी you will be surprised to actually realize कि 90% हमारा दिन का goes into communication. Either we are speaking, or we are listening, or we are reading, or we are writing. लार्जली आप देखिए हम ये चीज कर रहे हैं. मदर शायद खाना बनाते हुए भी कुछ सुन रही हैं, वॉशरूम में हम करते करते शायद हमने एक टूथपेस्ट का पैक उठा लिया, उस पर हम कुछ पढ़ रहे हैं. सो देयर इज अ कम्युनिकेशन दैट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द डे. जब 90% of our waking days or waking life is going into something called communication, how well are we doing it? So I think it is relevant to everybody.
जो लोग स्टेज पे जाना चाहते हैं, या जो लोग एक दूसरे से खुल के बात करना चाहते हैं, बच्चे जो पेरेंट्स से कन्वे नहीं कर पाते, पेरेंट्स जो बच्चों से बात नहीं कर पाते, हर जगह आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. So I've tried to structure this book with some very core points of communication, core values of communication, if I may call them, which will be important and relevant to any reader across the ages, across the cities, and across the gender. लेट मी क्लियर, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपकी खबर के व्यूअर्स को कि पावर कॉम एक जो बुक है वो दिस इज नॉट ओनली फॉर द पेरेंटिंग. हर जगह कम्युनिकेशन की जरूरत होती है. अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहां ये पार्ट हो सकती है. तो पावर कॉम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप किसी भी लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हैं तो वहां एक कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन की आपको जरूरत होगी. इसलिए पावर कॉम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. क्योंकि नेहा वाही जी ने जैसा कि बताया कि उन्होंने एक लॉन्ग टाइम इन सब में दिया है, पेरेंटिंग के मामले में दिया, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को उन्होंने टाइम दिया है. तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो अभी बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन हो रही है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो हर Absolutely. जगह हर आदमी को एक कम्युनिकेशन की, बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत होती. इसलिए ये जो बुक है जो नेहा वाही जी ने लिखा है, वो बुक पावर कॉम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो now let us move to the next question from to Neha Wahi ji. We see a very eminent personality has given a forward to the book. Tell us more about it. आई थिंक हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मिरेकल होता है. मैं इसे, आई विल नॉट कंसिडर दिस लेस देन अ मिरेकल, because yes, the foreword of the book has been given by the Siddharth Basu, who's a very well known producer director in the on Indian television. He's also known as a quiz master for years, and behind very big shows like Kaun Banega Karodpati, Jhalak Dikhla Ja. So, since communication has been very close to his heart as well, and Hamare growing up years mein as a child, I have really looked up to his quizzing and his shows. So, when I actually sat down and wrote this book, मैंने सोचा कि ऐसा कौन इंसान है जो इस बुक को रियल टाइम असेसमेंट दे सकते हैं, who can say that yes, this is relevant, this is needed, or this is good. So I wrote to some people, out of which one was Mr. Basu, and I think as I said, I feel blessed, and I think he's very kind that he took out time to go through the book. और बहुत ही डिटेल्ड उनका मुझे रिप्लाई वापस आया उस बुक के ऊपर, and he was very happy to give the forward. So I think that also explains, Rajiv ji, ki how important communication is in today's lives, and people who work around the sphere of communication, if they assess it and they verify the use of that book, it becomes even more authentic. And so every student, every individual who feels कि मुझे communication improve करनी है, उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. Also having said that, I feel हम सबको ऐसा लगता है, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा बोल पाते हैं. We always feel we are already there, हम इससे बेटर कर ही नहीं सकते. But I think communication is a very vast ocean. आप जितनी बार उसमें डाइव करेंगे, कुछ नया, कुछ अलग लेकर बाहर आएंगे. So there's no end to vocabularies, there's no end to beautiful phrases, how you can make your language stronger, more effective, how you can influence people better. So whether you are at say a 1 on 10 on communication or a 10 on 10 on communication, one must keep reading, whether it is my book or other people's books, but reading is a person's best friend without a doubt. नेहा जी, मुझे ध्यान है कि जब इस बुक की लॉन्चिंग हुई थी, बहुत ही ग्रैंड लॉन्चिंग हुई थी, बहुत ही अच्छी लॉन्चिंग हुई थी, और इसको कई जगहों पे लॉन्च किया था. आप जी. वो डिटेल इस बारे में बताएंगी. बट माय क्वेश्चन ये, व्हेन वाज द बुक लॉन्च्ड एंड हु वर द पीपल प्रेजेंट देयर? So the book was launched on the 24th of September this year itself, and it was launched in multi-cities. I was handheld by a beautiful organization called Women with Wings, and a very dear and a close friend who's the founder of the organization called Shefali Sangal. I think the organization believes in the work of women. It believes in moving ahead and taking the women tribe along with it as they move along.
So she saw a lot of belief, I think, put in a lot of belief in the book. उन्होंने recommend किया कि इसको multi city launch किया जाए, and I think without her this would have been a dream unfulfilled. So in multiple cities, that's Delhi, Mumbai, Bangalore, different eminent people came forward to launch the book. Delhi, it was launched by the HR head at Barco, Mrs. Dimple Rawat, who's ex Air Force. Then, of course, in Mumbai, we had Gauri Das, a very famous HR personality, and Ms. P. Inbarajan in Bangalore. So, different people in different cities came together. Lot of people participated. हमने school segment से principals को आते हुए देखा, corporate से लोग आए, coaches आए, trainers आए, students आए. So influencers I उसे attend करने. So it was a grand success, and I really take this opportunity to thank everybody who took out time that day to reach every city for the launch, and are still supporting the book in a very big way. So yes. I was also very fortunate. I was also the media partner in that event. So it was Yes, a I must thank you very as well. good How did I miss achievement that? for me. Yes. So I now next viewers of Aapki Khabar would like to know what is the general feedback that you are receiving from the readers. राजीव जी, बच्चों के साथ काम करने का फायदा ये होता है कि उनके अंदर क्या चलता है आपको काफी हद तक समझ में आ जाता है. एंड ऑल्सो बाई ट्रेनिंग आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. सो टुडे देयर इज वन थिंग आई एम वेरी श्योर ऑफ कि अटेंशन स्पैन तो अब ऐसी कोई टर्म रही नहीं है फॉर दिस जनरेशन. पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग फॉर वेरी लॉन्ग, इवन इफ इट इंटरेस्ट देम, तो भी जरूरी नहीं है कि उसको बहुत देर तक वो चीज कैप्चर कर पाएगी. सो ऑन अ पर्पज आई हैव केप्ट अ वेरी क्रिस्प बुक. तो आई थिंक मेरा ये इंटेंशन जो कहीं ना कहीं रीडर्स तक पहुंचा, लार्जली जो फीडबैक मुझे मिला वो यही मिला कि द गुड पार्ट अबाउट द बुक इज इट्स वेरी सिंपल एंड अ वेरी क्विक रीड. क्रिस्प है, बहुत लंबी और बोरिंग नहीं है, डिफिकल्ट टू फॉलो नहीं है. Plus, after every chapter, I've put some self-help exercises or activities that they can do in front of the mirror, or they can do, in a free time or while traveling. So as students or people, the youth especially, they're really relating to it because that's how they are. जब time मिला कोई चीज करके देख ली, try करके देख ली. So overall, the feedback of the book has been phenomenal. And बहुत ही remote interior places से जो मुझे मालूम भी नहीं था कि map पे exist करते हैं, वहां से भी बुक के ऑर्डर्स आए हैं, विच इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. नॉट जस्ट बिग सिटीज, बट एवरीबडी हैज दिस डिजायर टू कम्युनिकेट, रीच द स्टेज, इन्फ्लुएंस पीपल. So it's a very good feeling, and it's a great feedback up till now, at least with God's grace. ये अच्छी बात है. और जिस तरीके से लोग कम्युनिकेशन, चूंकि ये एक ऐसा ये पार्ट है कि इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है. कुछ भी अगर जी. आपको करना है तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसलिए जो आपकी बुक है वो बहुत ही अच्छा काम कर सकती है. मुझे ध्यान है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लॉन्च किया गया था, और जिस तरीके से ग्रैंड लॉन्चिंग बहुत अच्छे लोगों के द्वारा किया गया. जी. बैंगलोर, दिल्ली और इन सब मुंबई, इन सब जगहों पे एक बुक की लॉन्चिंग होना, उसमें इतने एमिनेंट पर्सनालिटीज का पार्टिसिपेट करना, ये Yes. बहुत ही अच्छा. और मुझे बहुत ही इस बात का ध्यान है कि उस लॉन्चिंग में आई वाज आल्सो वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज ड्यू टू आई वाज आल्सो मीडिया पार्टनर. दिल्ली हंट वाज द पार्टनर देयर. जी. तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट था. ये आपकी खबर के लिए भी बहुत बड़ा इवेंट था कि एक ऐसी बुक लॉन्च होने जा रही है जो इतनी जगहों पे लॉन्च हो रही है, उसमें बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. जी. So now we are moving to next question. What journey would you like to see the book doing there? आई थिंक राजीव जी, ये क्वेश्चन का आंसर तो सारे ऑथर्स सेम ही देंगे कि ऐसा कोई बुक स्टोर ना हो जहां अपनी बुक ना दिखती हो. बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि माय सोल इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग दिस बुक वाज माय वेरी रिच, deep and personalized experience with the people of different segments. मेरा रीजन कभी भी ये नहीं था कि the book should really hit the markets and earn money. The reason is it should make a difference. So the journey that I like to see is कि मुझे लोग इसके बाद ये कह सकें कि हमारा बहुत बड़ा ड्रीम था कि हम भी स्टेज पे जाएं,
या हम भी इन्फ्लुएंसर्स बने, या और कुछ नहीं, जब चार लोग बात करें तो हमको मुंह खोलने में शर्म ना आए, शर्मिंदगी ना हो, घबराहट ना हो। अगर इस तरह का फीडबैक भी मुझे मिले तो आई थिंक इट विल बी हाईली satisfying, much more satisfying than the revenue part of the book. So this is exactly what I feel, that the journey should be, and it should go to all parts of the world. Why not just the country, especially the remotest and the interior parts, where such good work is required. So this is what I want. Nehaji, can you quote any interesting portion from the book? Although every portion of the book is very much interesting, but please share some interesting portion from. Surely. Thank you so much for asking this question, Rajiv ji. I like to show everybody this, by the way, now that I'm holding it. This is my baby, I should say. And I'm going to read out a small portion, if you permit, from a chapter called Yin and Yang. So, Yin and Yang actually comes from the ancient Chinese philosophy, and it symbolizes the concept of dualism, describing how seemingly opposite or contrary forces may actually be complementary, interconnected and interdependent in the natural world, and how they give rise to one another. To simplify it, for example, if I talk about darkness, there's always going to be some element of light in dark. Similarly, in light, there will be some element of dark. So it will always complement each other. Similarly, I've tried to say that in yin and yang of communication also exists. So, if yin and yang of communication exists, then the feminine energy of communication would be yin. जहां आप ज्यादा पैसिव हैं, क्वाइट हैं, you have an ability to listen well, that becomes the yin of communication. When you are probably exchanging communication very assertively, आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, किसी को कुछ कन्विंस करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक देना चाह रहे हैं, probably that would become the yang of communication, where the masculine energy touches communication also on a daily basis. So, right from very technical aspects of communication, like grammar, nuances of a language, to rapport building and contact with the audience, I've also tried to touch small spiritual portions like yin and yang around communication also in the book. So, I really hope it interests the reader. Really, it is very much interesting, and very much interesting. It is also, you have mentioned in the book on the cover page, A to Z of communication. Ji. Does the Ji. alphabetical order have some relevance? Yes, absolutely. Because I think as a psychologist, I believe in brain mapping a lot. And whenever you're in the learning mode, I think brain mapping really helps. So I have tried to give a code to this book where A is probably for articulation, B for body language, C for contact, or D for diction, E for enunciation, F for facts and figure. So, goal, G for goal setting, H for humor. So everything has a very important meaning, and how it fits into the larger scheme of communication, the reader will know when he starts reading. So, for example, I when we talk about connection, अब बहुत सारे घरों में इतनी सारी टूथपेस्ट आने के बाद भी कोलगेट कभी रिप्लेस नहीं किया जा सका। डिसइंफेक्टेंट की बात आती है, हैंड वॉश की बात आती है, तो डेटॉल का नाम ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। जिस तरह की कनेक्शंस इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ एक कस्टमर, एक कंज्यूमर बनाता है, क्या एक इंसान के साथ बना सकता है? कैन यू कम्युनिकेट इन अ वे टू फॉर्म दैट कनेक्शन विद योर लिसनर? इफ यू कैन, देन यू आर नॉट अ स्पीकर एनी मोर, देन यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अगर आपको एक बार सुन के किसी को मजा आया पर अगली बार उसने आपको नहीं सुना, तो आप सिर्फ एक अच्छे स्पीकर हैं, पर शायद आप इन्फ्लुएंसर नहीं बने हैं। सो इट्स अ ये बहुत जर्नी। important point. जी। सो एग्जैक्टली दीज आर द थिंग्स आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट थ्रू द बुक, वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स जो हम सबको पता है, बट हम उस पर शायद अटेंशन या फोकस नहीं देते, ये सोच के कि डज नॉट मैटर। सो आई ट्राई टू रेज अ पॉइंट दैट नो, इट मैटर्स अ लॉट। इफ यू अलाउ मी, आई लाइक टू कोट अनदर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। हम सबके साथ ये बहुत ऑफन होता है राजीव जी, कि हम कहते हैं कि अरे हम क्या बोलने वाले थे भूल गए, या अरे हम ये बोलना नहीं चाहते थे या समझा नहीं पा रहे हैं। सो इन लैंग्वेज इट इज समथिंग एज सिंपल एज आर्टिकुलेशन।
जो मेरे ब्रेन की सोचने की एबिलिटी है, क्या मेरे थ्रोट हम्म, की वो कन्वे करने की एबिलिटी है? Am I speaking in the same words in which I'm thinking? Through the journey of birthing of that thought in my brain and its transportation till my tongue is articulation. So क्या रीजन है कि सब इतने क्लियरली सोच रहे हैं पर क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं? Is it the rate हम्म, of thoughts, the speed at which we are thinking, the speed at which we are converting it into words, or are these 90,000 multiple thoughts that we think in the day that corrupt that one thought that we are trying to हम्म, speak? So I've raised these important questions in the book for the reader to analyze कि क्या प्रॉब्लम है उनकी आर्टिकुलेशन में, क्यों वो नहीं कह पाते जो वो कहना चाहते हैं उसी ढंग से जिस ढंग में वो उसे सोच रहे हैं. So this is हम्म. around the book, a little more about it. कि बहुत ही इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट Yes. the way you have communicated and the way you are trying to quote everything, and so I think it is very much important for everyone to once read this book. And the 100%. next question from you, as you have received testimonials from stalwarts who came from diverse backgrounds, as you have mentioned earlier, how did they resonate with the book? Thank you for that question. That's a very important question again because it actually shows that this is a book that is relevant to various spheres. So, the three very important testimonials that the book has received is one from an author and an activist herself who comes from down south, who has more than 900 books to her own acclaim. She has written for Mhm. magazines, for movies, for editorials, and a lot of novels in different languages. For her to pick up my book and say, Ki, Neha, good job, very relevant to the youth today, was a very big thing to me. Why probably I got that authentication is because age old writers or veteran writers who've been writing for a very long time may have experienced that gap between them and the new generation. So Yes. they felt that I've fit that gap very beautifully because I work with them, so I understand their need better. The second Mm. testimonial came from one of the principals in Delhi, a very, very eminent personality who works for the CBSC Sahodaya as their president, and she's also the president of the National Progressive School Council all across India. So Mm. multiple schools के लिए वो काम करती हैं, and she's a mentor to me also. I go back to her for a lot of advice. शी फेल्ट कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम बच्चे उनके पास स्कूल लेवल पे लेके आ रहे हैं कि मैम ये कल्चरल क्लब में या थिएटर में या ड्रामा में ये बच्चे बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं, मैम हम नहीं बोल पा रहे. I think the book bridges Mm. that gap as well. So second testimonial was received from her, and third, of course, from Shifali from Woman with Wings. I could not have got the book out without her stamp on it because she looks at it as a very different product or a baby altogether, where she says ki it's a very empowering book for a woman who wants to do this journey of communication, lose the stage fright, lose the inhibition, and come out and own the world. So, three very different segments who have celebrated the book, and I'm very grateful to all three of them. So now the most important question: where this book is available? Yes, indeed, the most important question. This book is available both on Flipkart and Amazon. So please do order a copy because I've kept it at a very, very, very economical price right now because, as I said, I wanted to reach maximum numbers. So it's just a click away, and within few days the book will reach your hands. So please read it and review it on both the platforms so that I can continue working in this direction. I know it is of use, it is helpful and meaningful. अ, मैं आपकी खबर के व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि जो कम्युनिकेशन है ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम इस फील्ड में हैं, हमारे लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और सभी के लिए, अगर वो ऑफिस में है, जॉब में है, कॉलेज में है, स्कूल्स में है, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए इस बुक को एक बार पढ़ें, रिव्यू अपना दें, और जिससे कि नेक्स्ट नेहा जी फिर जब नेक्स्ट कुछ
किसी टॉपिक पे अगर कोई बुक लिखते हैं तो उसमें इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए। नेहा जी, आपने आपकी खबर के व्यूअर्स के लिए, जो कि मोस्टली हिंदी नोइंग पर्सन्स हैं, और दूसरा क्या है कि इंग्लिश में बहुत तेजी से आपकी खबर पॉपुलर हो रहा है, इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। खास करके कॉर्पोरेट सेक्टर में शेफाली जी ने इसको पूरी तरीके से बहुत कायदे से कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी खबर को पॉपुलर किया है। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा। आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने आपकी खबर के व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, और आपने जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो सारी चीजें, जो कम्युनिकेशन से ही सारी चीजें जुड़ी हुई, अल्टीमेटली वही काम आता है। हम कहते क्या हैं, बेटर किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, यही अल्टीमेटली काम आता है। हमारे माइंड में क्या चल रहा है, ये उतना नहीं फर्क डालता है जितना कि हम कम्युनिकेट क्या करते हैं, कहते क्या है। एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, हिंदी लैंग्वेज में इस बुक को डिमांड की जा रही थैंक यू सो है। मच फैज फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन। एंड ये पहली बार किसी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी कि इस पे काम किया जाए। एंड यस, आई एग्री विद यू, इट विल हेल्प अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. But at the same time, I promise you that the language used in the book in English is also very simple, very layman. अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पाएंगे उसकी इंटरप्रिटेशन में, तो कोशिश जरूर करिएगा. Meanwhile, I will give it a thought of how we can convert it into Hindi. And thank you so much for that feedback. Means a lot. ओके, थैंक्स नेहा जी, आपका, आपकी Thank you खबर के so much, व्यूअर्स का। Rajiv ji. और फिर नेक्स्ट टाइम फिर किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू। Thank you, everybody. Thank you to the viewers. Thank you. Thank you.